अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन आज के हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त का। जैसे कि हमारा प्रोग्राम पॉडकास्ट इल्म की बात, और आज हमारे पास प्रोग्राम में इल्म की बात में दो इंतहाई अहम, इंतहाई डाइवर्स बैकग्राउंड से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। Our first guest is Mr. Ben Lawton. Mr. Ben Lawton is the Deputy Country Director, British Council, Pakistan. He has the vast experience of working in Africa, Middle East, and on the very strategic positions. And we are honored to have Mr. Ben Lawton in our today's program. And second guest which we have today is Mr. Mazhar Siraj. Mr. Mazhar Siraj is the Director of Education at the British Council, Pakistan. Again, with a very rich, very diverse experience in the research, in the educational program development. So, first of all, Mr. Ben Lawton and Mr. Mazhar Siraj, welcome to our program, our podcast, Ilm Ki Baat, the education talks, which we'll discuss about. And happy Independence to you too. So, thank you for coming. Thank you very much, Prem, for inviting us to be part of the talk today. I'm really looking forward to it. It is lovely to be in Karachi and to have had time together with you and your counterparts here at the department. It's been a really good morning so far, and I look forward to talking more about our work and cooperation together. Happy Independence Day, obviously, to all of our friends across Pakistan, and thank you also for this wonderful ajrak. You look amazing in Wearing this today, I think feels appropriate. You look amazing in today. And Mazhar साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम इल्म की बात में। और जैसे कि ये आज़ादी एपिसोड है, 14 अगस्त हम सब मना रहे हैं, तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस इल्म की बात प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया प्रेम यहाँ इनवाइट करने के लिए। और ख़ास तौर पे मैं कुछ देख रहा था लिटरेचर ब्रिटिश काउंसिल की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, और मार्च 1948 में ब्रिटिश काउंसिल का पहला ऑफिस सेटअप हुआ, और वो कराची में सेटअप हुआ। And here we're talking, sitting in Karachi, talking about British Council's work in Pakistan, और जो लर्निंग के ऊपर बात है, तो मेरा ख्याल है बहुत I'm looking forward to it. That's very wonderful that British Council and Pakistan, especially Karachi, has a friendship older than 78 years. So that's amazing. Mr. Ben, my question is to you. Many people know British Council from just the English language courses or the IELTS preparation. Even when I was doing my IELTS, I just knew British Council for that purpose. But I know British Council is doing much more than just IELTS. Could you tell our listeners about what the British Council's program are and overall your work in Pakistan? Yeah, thanks, Prem. That's a really good question. And I should say from the outset that experience that many people have with the British Council of their IELTS test, or maybe their international version of the UK school exams, that's really important to us, because we know that those opportunities are open doors for collections and collaborations globally. So that work is really important. But you're right. I mean, the British Council aims, and I think has been a long-term, imaginative, authentic partner to the people, the institutions and the government of Pakistan over those 78 years. And all the way through that time, trying to think about ways that we can create opportunities for learning, for creativity and for connection, particularly for Pakistan's greatest resource, which are their incredible, dynamic young people. And we do that in different ways. So one of them is through the arts and culture. So that could be around creative exchange. So we support ways in which people in Pakistan can access great British writers or great British musicians, and vice versa. We work also on cultural heritage protection, because that's so important. And here in Karachi, Khaled Dina Hall is a good example of where we've worked with partners here and supported them. Or over in the Mohana community in Manchar Lake, we've done some work there, incredible cultural heritage. But also on the creative economy. And of course, I'm sitting here in a studio in Karachi, the home of Coke Studio. So we've done work in support of the great music industry that comes from Pakistan, the screen industry, and increasingly also on the textiles industry as well, which feels appropriate. But we're probably most known for our work in education. And it's really at the cornerstone, because we know, and I think you agree, that education transforms lives.
It really is a route to transform people's opportunities and lives. And maybe if I start at sort of the school stage of education, I'll work through how we work, connections and partnerships in Pakistan. In schools, we have a piece of work with the governments, provincial governments, around foundational learning. So helping that kids age sort of 10 have got the kind of fundamental literacy and numeracy that they need, because that's a big challenge that's shared across with many of our partners. We work to support English teachers in primary schools and help them with the way they can help kids to learn to speak English better. And our work in partnership here in Sindh is very much related to that. We obviously offer those international versions of UK school exams that open up opportunities for further study into higher education. And we support a lot of work to provide access and skills for girls in education, particularly, either through scholarship programs funded by the Scottish Government, for example, or a work in partnership, particularly with UNICEF on English and digital skills for girls in secondary. So that's the sort of really key part of our work in schools. Moving into higher education, that's also particularly important as well. So we looked at how we can build connections between the higher education systems in both countries so that there can be collaborations in teaching and learning or in research and sharing knowledge and ideas in higher education that creates obviously more opportunity for knowledge creation and opportunities for students. We operate some scholarships on behalf of funders. We look at information about mobility to the UK for higher education study, and obviously that's where your IELTS test would be part of it. Exactly. And we support alumni when they come back to Pakistan, so they can build their connection and their careers. So you can see there's a lot there that we do, as well as those very important tests that we administer. That's wonderful. I mean, that's really something, in the culture, heritage, in the education, and again, within the education from foundational learning all the way to the higher education. And let's bring me to the Sindh part. تو مظہر صاحب سندھ میں اگر ہم بات کریں تو آپ کی کلوز کولابریشن اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اور ایسٹ پروگرام کے حوالے سے. تو اس کے پروگرام کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے, اس کے سیلینٹ فیچر کیا ہے, اس کے چیدہ نکات اگر آپ ہمارے آڈینس کو ایسٹ پروگرام کے بارے میں بتائیں تو. جی بہت شکریہ پریم. سندھ میں ظاہر برٹش کونسل کافی سالوں سے کام کرتی آ رہی ہے, اور اس وقت جو ہماری ظاہر پارٹنرشپ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے وہ تھرو ایسٹ پروگرام ہے. ایسٹ یعنی انگلش ایز اے سبجیکٹ فار ٹیچرز بیسیکلی پروگرام کا جو نام ہے. تو یہ 2 سال کا پروگرام ہے جس میں ہم گورنمنٹ آف سندھ نے جو نئے ٹیچرز ہائر کیے ہیں پرائمری اسکول لیول کے اوپر, موسٹلی ان ٹیچرز کے اوپر یہ فوکس کرتا ہے ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اب اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ, اگر ہم اس کو تھوڑے وسیع تر تناظر کے اندر دیکھیں, کہ جو لرننگ کا چیلنج ہے سندھ کے اندر بھی ہے, باقی سارے صوبوں کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ لرننگ کے ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ بین نے بات کی فاؤنڈیشنل لرننگ کی, کہ جو سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھی لینگویج کی جو ریڈنگ ہے فار ایگزامپل, یا میتھمیٹکس میں جو بیسک سکلز ہیں, یا انگلش کی جو سکلز ہیں ریڈنگ کی. ہمارے جو بچے جب 10ویں سال تک پہنچتے ہیں یا گریڈ 5 تک پہنچتے ہیں تو جو پروفیشنسی کمپیٹنسز ان کو ڈیولپ کرنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی, اور یہ ایک بڑا ایشو ہے. اس میں تقریباً 1/4 کے قریب جو بچے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے, وہ کرتے ہیں, باقی رہ جاتے ہیں پیچھے. بیسیکلی جو اکثریت ہے وہ نہیں کر پا رہے. اچھا, اب اس میں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اس میں جو سب سے بڑی انپوٹ ہے سسٹم کے اندر وہ ٹیچرس کی ہے, بیکاز ٹیچرس اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کلاس رومس کے اندر, اینڈ دے آر رسپانسبل فار ٹیچنگ اینڈ میکنگ شیور کہ چائلڈ از ایکچولی لرننگ. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انگلش میں خاص طور پہ پرسنٹیج نیچے ہے, یعنی اردو میں پھر بھی بہتر ہے, میتھ میں پھر بھی بہتر ہے, لیکن انگلش کے اندر کم ہے, اور وہ چونکہ ایک فارن لینگویج ہے تو وہاں پہ زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں ٹیچرز بھی اور بچے بھی. تو اس پروگرام میں ہم فوکس کر رہے ہیں ٹیچرز کی جو سکلز ہیں انگلش کے حوالے سے, تاکہ وہ کانفیڈنٹ طریقے کے ساتھ بچے کو پڑھا سکیں. لیکن اس کے اوپر اس کے اندر یہ بھی فوکس ہے کہ جو پیڈاگوجی ہے, کہ یعنی ہاؤ ٹو ٹیچ انگلش ان کلاس رومس, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف پھر انگلش تک بھی نہیں ہے, یعنی اگر آپ نے باقی لینگویجز پڑھانی تو اس کے اندر بھی ہے. تو یہ پروگرام پورے سندھ کے اندر جو 30 ضلع ہیں سب سارے ضلعوں کے اندر ہے, اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم نے
ऊपर एक हमारे पास कोर्स लीडर्स हैं और वो कोर्स लीडर्स पे नीचे काम करते हैं. दे आर कैस्केडिंग द ट्रेनिंग डाउन टू अराउंड 1000 मेंटर्स जो बेसिकली गवर्नमेंट के टीचर्स हैं. उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर वो नीचे जाके तकरीबन 31,000 के करीब जो टीचर्स हैं जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, इवन फॉर जो रिमोट एरियाज़ हैं आपके उसके अंदर, उनको वो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है LMS, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको आप उस्ताद कहते हैं और बड़ा अच्छा नाम है ये, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसमें 5 मॉड्यूल हैं. टीचर्स अपने पेस के ऊपर वो कर सकेंगे, लेकिन उसमें जो ख़ास दूसरी बात है कि ये ब्लेंडेड है प्रोग्राम की अप्रोच, कि सिर्फ ये नहीं कि वो उस ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर जाके तो वो सीखेंगे, लेकिन उसमें मेंटरिंग की जो सपोर्ट है ऑन गोइंग एक्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस्ड है वो बड़ी क्रूशियल है. बिकॉज उसके बगैर जो हमारी ग्लोबल लर्निंग ब्रिटिश काउंसिल की, और हमने इस पर स्टडी भी की है कि सिर्फ जब आप कैस्केड डाउन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आता अनलेस यू कंबाइन दैट विद मेंटरिंग सपोर्ट. तो इसमें जो मेंटर्स हैं उनका रोल बड़ा क्रूशियल है. इस स्टेज पे हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगली जो स्टेजेस हैं उसके अंदर फिर हम टीचर्स के साथ. तो जैसे कि मज़हर साहब ने बताया कि जो ईस्ट प्रोग्राम है वो तमाम अज़ला जो सिंध के हैं उस पर जो असातिज़ा हैं 31,000 असातिज़ा उनको जो इंग्लिश, उर्दू और सिंधी लैंग्वेज को पढ़ाने के जो तरीक़ेकार हैं, उसके कंटेंट है, उस पर एक बहुत ही जामा और एक ही बहुत ही उम्दा किस्म का ट्रेनिंग प्रोग्राम है. सो मज़हर, इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप, हाउ हैज़ बीन द पार्टनरशिप सो फार, especially for the East program between SELD and the British Council? Would you like to share your reflection on the partnership, how it's working so far? To me? Yes. Well, of course. I mean, I just heard you talking about languages, and having heard you speak, I must say it just shows you how powerful it is to be able to understand and to communicate in a different language. Because I couldn't understand your conversation because sadly I don't speak Urdu, but you know, that's why language learning is so important. And also I think engaging in all that rich linguistic diversity as well to really benefit both learning but communication, because it's so empowering to be able to speak a language and be able to therefore engage in the world, and that we feel it every day. But the partnership, I would say, has been absolutely central and constructive from the very, very beginning. And that's what gives, I know, myself and my colleagues tremendous confidence, because the only way that we can all work together is through partnership, because it helps, I think, right from the very beginning of the foundations of the design of this work, which I think Mazhar has talked a little bit about. And today we've just had a really constructive meeting looking at, okay, how do we make this work together across all of the different partners across the government of Sindh and the department, from HR through to training and development, through to data management. So it's really, really important. And for us as a partner and as a friend of Pakistan, for us, we can only work in this way in partnership, because it's the teachers here in Sindh, it's your education system, and we just want to work together in partnership to help produce higher quality and more inclusive education system that works for everybody. Right. And talking about the digital solution, as Mazhar also shared in his previous response, that we are using a blended approach. So, of course, it used the human interaction with mentor to teachers, but it also has an aspect of digital learning. So how do you think that teachers can prepare themselves using that digital solution, and how they can help students to improve their learning outcomes, especially from this program? So the advantage of a digital or a blended program is that hopefully it gets the best of both. So the digital offer allows many, many thousands of teachers ultimately to be able to access this material. The mentoring obviously allows that individual coaching and support, because ultimately it's about helping teachers to feel confident and skilled in the classroom. And these are tools that help teachers to get there. I think the challenge about how do we do this collectively at scale, part of that challenge is answered by this hybrid approach. But of course,
it takes a bit of time to get used to online learning and online mentoring. So that will take a bit of time, but once people become familiar, then I think from my experience elsewhere, it accelerates. And I think that familiarization is part of the initial training. And of course, because we are constantly in contact, we'll look to see if we can tweak and amend that based on feedback from the trainers and the teachers. Great. So, Mazhar साहब, अगर हम इस प्रोग्राम के ओवरऑल डिज़ाइन पे अब तक जो आपने बात की है हम देखें तो इसका स्केल तो ऑफ कोर्स इम्प्रेसिव है ही है कि दे आर 31,000 टीचर्स, बट बियॉन्ड द नंबर्स क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि जी ये प्रोग्राम जो है वो विद द सपोर्ट ऑफ SCLD या विद द कोलैबोरेशन ऑफ SCLD सक्सेसफुल होगा? इसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया प्रेम. सो इसमें देखें स्केल के हवाले से भी ज़ाहिर है, अगर हम बात करें तो ज़ाहिर सारे ज़िलों के अंदर है, 31,000 टीचर्स की हम बात कर रहे हैं. सो प्रोग्राम विल produce a critical mass of teachers who have better skills in English language teaching, but also a wide range of other skills as well. That critical mass would remain within the system. तो एक तो वो बड़ा क्रूशल है, और वो कैसे जाके क्लासरूम प्रैक्टिस को कैसे इन्फॉर्म करता है जाके बच्चों की एक्चुअल लर्निंग, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा ये है. और ये जो 31,000 टीचर्स हैं हमारी, जो इंटरेक्ट जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कि तकरीबन दे वुड बी टीचिंग अराउंड 2 million चिल्ड्रन. 20 लाख बच्चे, बिल्कुल. तो इज सिग्निफिकेंट इन दैट सेंस. सो उनकी ये बड़ा क्रूशल है कि वो टीचर्स पर उन स्किल्स को अप्लाई कर रहे हो क्लासरूम के अंदर, और उन बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर हो. लेकिन इसका ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं जहाँ पे इसका एक आई थिंक एडवांटेज है इस प्रोग्राम का, एंड स्पेशली लुकिंग बियॉन्ड द प्रोग्राम लाइफ टाइम, इज़ कि बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट लिटरेसी एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट आल्सो इसमें स्टैडा है, इसके अंदर आपकी बाकी जो पाइट है, और नीचे जो आपकी और बाकी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस इसकी डिलीवरी में इन्वॉल्व हैं. तो वो जो सिस्टम के अंदर कैपेसिटी बिल्ड हो रही है टू डिलीवर ब्लेंडेड लर्निंग फॉर टीचर्स, बिकॉज सिंध इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंसेस लाइक पाकिस्तान के अंदर, और उसमें टीचर्स की तादाद तो 30,000 से 31,000 से तो कहीं ज़्यादा है ना. तो फिर वो जो एक कंटिन्यूस नीड है फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो हम सीख रहे हैं, जो लेसन्स हैं कि एक्चुअली हाउ डू यू डिलीवर राइट फ्रॉम द टॉप डाउन टू क्लासरूम एक ब्लेंडेड जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अप्रोच है, उसके अंदर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, हाउ डू यू ओवरकम द इंफॉर्मेशन फ्लो इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, कैपेसिटी कैसे बिल्ड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो बड़ा क्रूशल है. सो उसमें हमारी इसमें एक्सपेक्टेशन खास तौर पर मैं आई रियली अप्रिशिएट जो मिनिस्टर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस डायरेक्टली एज वेल, स्टैडा की लीडरशिप, that commitment is an asset honestly, because उसके बगैर इसको स्केल पे लेके जाना बड़ा मुश्किल होगा. लेकिन वो कमिटमेंट हमें नज़र आ रही कि हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि जी इसको जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो इसके बाद इंशाल्लाह द डिपार्टमेंट इज़ गोइंग टू टेक इट टू स्केल, एंड अदर टीचर्स वुड बेनिफिट आल्सो फ्रॉम दिस प्रोग्राम. इसमें हम बात करते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे आपने बात की कि जो ये ट्रेनिंग जो है वो ऑफ कोर्स सिर्फ टीचर्स को बेनिफिट नहीं कर रही, ये 2 मिलियन बच्चों तक जा रही है, तो उसके बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने का इस प्रोग्राम में कोई इस तरह का कोई तरीका है कि जिससे ये मेजर किया जाए कि वो जो 31,000 टीचर्स हैं जिनको हम ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी वजह से बच्चों के लर्निंग आउटकम पहले ये थे और अब इतने हैं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई या नहीं, तो कोई तरीका है कि इसको मेजर किया जा सके कि बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में क्या बेहतरी आई है? देखिए जो अभी तक प्रोग्राम का डिज़ाइन है, बिकॉज हमारा इस वक्त जो मेन फोकस है वो टीचर्स के ऊपर है, और उसमें ज़रूर ऊपर मेंटर्स भी हैं जो उनके साथ काम कर रहे होंगे, और जो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस है कि वो कितनी इफेक्टिव है, उसके मेथड्स और उसके जो डाटा कलेक्शन है और मॉनिटरिंग का एक सिस्टम मौजूद है प्रोग्राम के अंदर. इस वक्त हम नीचे क्लासरूम पे डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे जो लर्निंग आउटकम्स, इस प्रोग्राम में नहीं कर रहे. उसकी एक वजह ये भी है, नंबर एक तो बिकॉज वी विद इन दिस 2 years वी रियली नीड टू फोकस ऑन जो ट्रेनिंग इटसेल्फ है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम मेजर करेंगे जी बेस लाइन क्या आती है टीचर्स की, और जब वो कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त क्या इम्पैक्ट उसका आएगा. अब इसमें एक अजम्पशन है कि वो टीचर्स दे वो ट्रांसलेट दैट लर्निंग इनटू क्लासरूम ना, उस अजम्पशन को टेस्ट करना है, जिसके लिए आई थिंक as part of the monitoring and evaluation, I think those are the discussions we would have over the department and with STADA as well.
लेकिन उसमें जो बाकी जैसे नेशनल अचीवमेंट टेस्ट है फॉर एग्जांपल या असर की डाटा कलेक्ट करता है लर्निंग के ऊपर, वी वुड स्टिल हैव डाटा दैट कैन टेल अस द स्टोरी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे हमने ऑपरेट किया वहाँ पे लर्निंग के अंदर कुछ ट्रेजेक्ट्री के अंदर डिफरेंस है कि नहीं है. बट आई थिंक बैन शुरू में कह रहे थे कि it's also a kind of journey, it takes time, right? For that training to kind of embed into the system and translate into actual learning. Great. So clearly this is, again, as I said, ambitious program, but how, Ben, do you see once the British Council's support is concluded in this phase and how that department itself can, scale it and continue it for the other teachers? So how that impact which you created can last longer beyond your commitment in this program, if you would like to talk about that. Prem, I would say it's not the impact that we British Council have created, it's the impact that we have designed together collectively. Mm-hmm. So the people driving this car, this bus, are the ministry. And so that has the greatest success then of sustainability, because it links very closely to the department's objectives and aims, which obviously we agree with and want to support. And therefore it's much more likely, because it will be and is embedded more in the wider plans of the department, to be sustainable after these specific interventions and be of benefit to wider numbers of teachers beyond the individuals that are part of it now. But I should also say that the British Council is a long-term partner in education in Pakistan. So this is where we're focusing together now, but in the future that could work into some of the other areas that I know we're in discussion with now and has been mentioned. So, we're here hand in hand for the long term, and we'll see as the world changes, as new technologies come in, new opportunities, new challenges. We hope to continue to work together to find ways that we can address those. Can I add yes, to this please, question? Please, because I think this is a very important question. And one of the things we were just discussing in the steering committee of this program is that, Sindh is kind of leading some of the very innovative reforms in as far as teachers are related, right? So, for example, the teacher licensing regime in the province, the creation of STEDA itself, for example. We have hired more than 94,000 new teachers as well. So I think there's a big political commitment in the province around teachers' professional development, around foundational learning. And that is where I think we think that we shouldn't just look at this program operating within these just 2 years, because within these 2 years, we are very conscious that we are working with government systems to make sure that this reform and this kind of model is embedded into government's own reforms. And we had this very good discussion, how can we link it to, for example, since teacher licensing regime and its recognition and acknowledgement that also motivates teachers, because motivation is crucial, right? Teachers really need to feel motivated that, if they're participating and they're spending time on learning on LMS, or they are working with mentors on this program. So I think we really want to situate this and position this program within the broader kind of institutional reforms that the department is spearheading. And then really, we have seen kind of people talking in other provinces also about Sindh really leading these reforms on teachers and teacher licensing. I think that is very crucial part. Yeah, absolutely. As Mazhar mentioned, that the motivation is really very important, and it's not only just one module or 1-2 days of the training off the shelf, but it's kind of a long-term sort of a process. And listening to you, it's clear that the partnership with the government is central to British Council's approach. So is this what you are already, the similar model you are applying in other parts of the Pakistan as well, along with the same, like working with the government? Yes, I mean, it's central to everything the British Council does. Partnerships with provincial and federal governments and agencies on areas of shared priority to create those opportunities. Our partnership here in Sindh, I think, is exemplary in terms of the depth, the way it started right from like day one discussions
it's felt extremely collaborative all the way through. But we have very similar partnerships with the Federal Higher Education Commission, for example, on partnerships in higher education, with skills education authorities, and with provincial governments elsewhere as well. But the same fundamental principles. What are the priorities for the province? How can the UK sector connect into that and work together for those outcomes? But also building in the long-term sustainability and scaling from the outset. I think that it's there in the fundamental. I know I'm repeating myself, but I'm repeating myself because it's so fundamental. So fundamental, so fundamental, and so result-oriented so far, I would say. So, which brings me to another question: that are there any potential areas of future collaboration in some other areas other than East in Sindh you are seeing maybe next 1 year, 3 years, 5 years? Well, I think Mazhar touched on some of this now in our conversation, and I think because we have such sensible discussions, I think much will depend on what the priorities are for the department and for Sindh over the course of these few years, and then we will always be part of this conversation to see how we can cooperate, and also with third parties, because we're a technical organisation. We have some funding, but we would also be looking to build partnerships to bring in both policy, operational, strategic, but also funding and financing to deliver that. Mm-hmm. So, as Ben talked about the other parties to be engaged, so here I'd like to share that how the private sector engagement can play a role in improving education in general, and particularly in the context of Sindh. प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है एजुकेशन सेक्टर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर आप पूरा डाटा देखें तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोस कंट्रीज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल इट हैज़ ग्रोन enormously over years, and it's also because of scale, of course, because we're talking about millions of children who are out of school, even those in school they need more support. तो प्राइवेट सेक्टर का रोल सर्विस डिलीवरी के अंदर तो क्रूशियल है, और हमने देखा है कि लो कास्ट प्राइवेट स्कूल्स, इवन जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है पहुँचना, वहाँ पे दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एंड सो सर्विस डिलीवरी के अंदर उनका रोल बहुत क्रूशियल है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो रोल इनोवेशन के अंदर है एजुकेशन में, मेरे ख्याल उसको वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एज वेल in terms of innovation in service delivery, different schooling models के अंदर. बट जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है फॉर एग्जांपल, उसमें प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी लीड किया है एजुकेशन सेक्टर में, नॉट जस्ट सिंध बल्कि बाकी तमाम प्रोविंसेस के अंदर भी. अब उसमें गवर्नमेंट ज़ाहिर है मुख्तलिफ मॉडल्स के थ्रू इनकरेज करती रही है, सपोर्ट करती रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को. सिंध में भी एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए से, और ईमोज़ का जो पूरा मॉडल है उसके ज़रिए से प्राइवेट सेक्टर को मेरे ख्याल, और वो बड़ा क्रूशियल है प्राइवेट सेक्टर का, बिकॉज अगर आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर की जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं अगर आप उसको सामने रखते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ओनली थ्रू पब्लिक सेक्टर, जी बिल्कुल, बड़ा मुश्किल है कि आप जो इतने बच्चे हैं आप कैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. तो मेरा ख्याल उसको पॉलिसी के अंदर बिल्कुल देखना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट बैलेंस क्या है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी शाना बशाना काम कर रहा हो पब्लिक सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ. ब्रिटिश काउंसिल वही वर्क विद लॉट ऑफ काइंड ऑफ एक्टर्स इन नॉन स्टेट, आई वुड से स्पेस. फॉर एग्जांपल हम पंजाब में जैसे काम किया है, बल्कि इधर यहाँ ईस्ट के अंदर भी इवन जो नॉन स्टेट प्रोवाइडर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोलैबोरेशन बड़ी क्रूशियल है फॉर पॉलिसी इंप्रूवमेंट, डिलीवरी, इनोवेशन और डिजिटल स्पेस के अंदर भी. जैसे हम कहते हैं कि इट टेक्स अ सोसाइटी टू रेज अ चाइल्ड, तो दिस इज एग्जैक्टली, तो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट. अच्छा, आपने जो हमारे मेंटोर्स की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, वो आपने ट्रेनिंग खुद भी जाके अटेंड की, देखी, आप टीचर से भी आपने गुफ्तगू की, तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम अदर स्टेक होल्डर्स? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है खास तौर पे आपने जो मेंटोर? कल कराची में बड़ा अच्छा मैं गया वहाँ पे स्कूल के अंदर, और वहाँ पे मेरा ख्याल उसमें कोई तकरीबन 95% तो देवर फीमेल टीचर्स बेसिकली. और वहाँ पे मेरे ख्याल जो एक्साइटमेंट मैंने देखी उनकी प्रोग्राम के हवाले से, वो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतने शौक़ के साथ उसके अंदर वो शामिल हैं प्रोग्राम के अंदर.
और उसको समझ रहे हैं, और जो डिफरेंट टेक्निक्स कोर्स लीडर्स उनको बता रहे थे उसके अंदर दे वर रियली आस्किंग वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल क्वेश्चंस. एक्सपेक्टेशंस देखें, मेंटर्स का जो रोल है मेरा ख्याल है जो हमारे टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तकरीबन 1000 के करीब. मिडल में उनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इफ़ यू आर जस्ट लिविंग इट टू प्राइमरी स्कूल टीचर्स, और हमें पता है कि सिंध के बहुत सारे इलाकों में ख़ासतौर पर रूरल साइड में और ये ओवरऑल पाकिस्तान में ज़रा डिजिटल गैप की हम बात करते हैं, डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, नीचे टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन उस तरीके से नहीं है. अगर हम सिर्फ LMS के ऊपर रिलाय करेंगे और सिर्फ प्राइमरी स्कूल टीचर्स के ऊपर रिलाय करेंगे कि जी अपने तौर पे वो करें, तो वहाँ पे शायद हम वो इम्पैक्ट अचीव ना कर पाएँ. तो जो टीचर्स और मेंटर्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी उन सब से गुजारिश है और उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि दे शुड वर्क वेरी क्लोजली विद मेंटर्स, और उसमें कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस की भी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से एक्चुअली काफ़ी रियल इंसाइट्स उनको मिलेंगी, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो बेस्ड इंसाइट्स होंगी, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होंगी. सो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर मॉड्यूल्स हैं दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ, लेकिन मेंटर्स के साथ जो कोलैबोरेशन है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट. और मुझे ये उम्मीद है कि ख़ासतौर पे जो जब वो कंप्लीट करेंगे तो वो उसको क्लासरूम वो अपने तक सिर्फ नहीं रखेंगे, वो अपनी फैमिली के अंदर भी लेके जाएं, और जो क्लासरूम के अंदर बच्चे जिनको पढ़ा रहे हैं टीचर्स और कम्युनिटीज़ की सपोर्ट तो ज़्यादा क्रूशल है, अगर आप उसके बगैर तो वो मुमकिन नहीं है. Great. So Ben, since it's been a little less than a year, you started working with British Council in Pakistan, and you've been to Karachi a couple of times. How you found Karachi in general, like, you know, our culture, food, places? I just want to get your reflection on Karachi. I love Karachi. I mean, Karachi, I've had the privilege of being able to see a number of different parts of Pakistan, but I still feel I have only just scratched the surface of the depth and richness of Pakistan across the whole country, from the Himalayas to here on the sea. But I mean, I've always found Karachi to be a place of energy, of dynamism, of food. Obviously, food has been amazing, but also of great warmth and engagement and openness to have the kinds of conversations that we've had over these years. And people who know about projects know that sometimes they can take a very long time to get sort of started. This initiative together has moved at a really quick pace. Yeah, it is. And that only happened, but not just quick to cut corners. It's moved quickly in a really methodical, inclusive, constructive way that I think sets it up for success. So I'm really looking forward to not only hearing more about it from you and my amazing British Council colleagues who work closely with the department on this, but also coming down and seeing some of it more in practice later in the year. But it's wonderful to be in Karachi, always. So before we wrap up, is there any message you'd like to leave for our teachers in Sindh who will be participating in each program? Any message for mentors? Any message for SELD policymakers? Your words of wisdom? I mean, for SELD, I mean, just my sincere thanks and our respect and appreciation really for how you tackle this complex challenge of how do we build a better quality and an education system that works really for all. But as for teachers, I myself was an English language teacher and trainer many years ago, so I have utmost admiration and respect for teachers. Of all the things that can affect a child's learning experience and their outcomes, I think the teachers are the one that have the biggest effect. And so you're so central. And so a massive thank you in advance for engaging with the training on top of what I know is a busy work life. And I wish you every success with experimenting with new ideas in the classroom and seeing what works for you and your professional development and for those children in your classes, because you have such an awesome responsibility and privilege to be there to shape the future of Pakistan, and in our particular project over 2 million children. So a massive thank you in advance. And for the mentors, I know what they will be so important for those teachers, and they'll be the front line to support and teach and help the teachers
grapple with professional challenges. Exactly. And so, my sincere thanks and appreciation to them as well in advance as they start on this journey. And they will be so important to help us all know what's working and what isn't. And you said it earlier that it takes a whole society to raise a child. So my thanks also to the parents of those kids that commit to their children, go to those schools, to the school leaders, to the district level, all the way through up to the Minister's office himself for their support for this. Really appreciate it. Great. So, your last words of wisdom from our today's podcast for teachers, especially something inspiring, something, it goes with the independence spirit. Precisely. Yeah. Thanks so much. I think like Ben, I also come from a family of teachers. My father was a teacher. My two brothers are still in the education sector. So مجھے اور چونکہ ہم خاص طور پہ یوم آزادی کے حوالے سے اس موقع پہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے میرا جو مین میسج ہے وہ یہ ہے تمام ٹیچرس کے لیے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے میرا خیال ہے وہ بہت راستے کھولتی ہے بچوں کے لیے, ہماری نسل کے لیے اور پاکستان کی آبادی بیکاز اٹس اے ینگ پاپولیشن. I think we really need to kind of invest in children's education at all levels. صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے, وہ ٹیچرس کی بھی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ ٹیچرس جن کو اس طرح کی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اور ٹریننگ کی, میری ان سب سے گزارش ہے کہ اس ٹریننگ کو نیچے تک لے کے جاؤ. اینڈ ایوری تھنگ دیٹ اے ٹیچر delivers in the classroom, even if that is a kind of second of instruction, that is a contribution to that child's future. So that is my message. جی بہت شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ مسٹر بین فار دیز ویری انسپائرنگ تھاٹس, ویری انسپائرنگ میسیج, اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی thanks to British Council for being an amazing partner to Sindh, to Pakistan. اور تمام ناظرین, آپ تمام ساتھیوں سے بھی ایک گزارش ہے کہ جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے فرمایا کہ تعلیم جو ہے وہ بچوں کے مستقبل کے لیے بہت سی نئی راہیں کھولتی ہے, اور آج اس جشن آزادی کے موقع پہ ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو, ہم سندھ کو جو ہے وہ اسکلڈ, ایجوکیٹڈ اور پراسپر نیشن بنانے میں ہر اپنی ممکن کوشش کریں گے. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا, اور اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا. پاکستان زندہ باد.